Hello my all new friends of our new 11 science. Okay, so first I am giving my introduction. My name is Nikhil sir. Okay, I have experience of 10 years and I have been teaching in our this Krishna Science School since 2010. Okay, so we are starting or any one chapter of our this 11 science, but before we start any chapter, first I am giving some simple introduction about some important chapters. Like, so you know that one name, trigonometry. Okay, very famous and very important. Trigonometry is an important part of your 10th, 11th, 12th and after 12th engineering, otherwise any concepts. So trigonometry is the most important first part of our 11th and also 12th. Trigonometry part is the main part is given in our 11th science, but some part are given in our 12th science also. Ready? Okay. Guys, very carefully listen. ट्रिग्नोमेट्री आपके पास 10th में जितनी भी फॉर्मूला थी, ठीक है, तो यू कैन सी दिस ऑल अप टू दिस पॉइंट, दिस ऑल योर 10th concept, not new for you, totally repeat concepts. Ready? So without these four concepts we cannot study our 11th science topic. First we need all your basic concepts. Ready? Okay, chalo, so one important topic is a trigonometry, and trigonometry related many chapters, many important chapters are. So trigonometry related first chapter is a differentiation and very important, and trigonometry and differentiation related another chapter is a integration. Without differentiation and trigonometry, without trigonometry and differentiation, integration 100% not possible, and without trigonometry, differentiation 100% not possible. Ready? Okay, chalo. So three main important topics, chapters are trigonometry, differentiation and integrations. Okay? Differentiation only 5% is given in our 11th science. But all differentiation, main part of the differentiation, many formulas, many sums, many methods are given in our 12th science. Okay, and integration fully part is given in our 12th science. Ready? So main important chapters, important for the our 11th and 12th and for the further studies, and then important for the only for the 11th JEE concepts, trigonometry, differentiation, integrations. These three are main important chapters of our 11th science, 12th science, all science. Ready? Okay. Many other chapters are given in our 11th science, are given in our 12th science, like in our 11th state lines, set theory, conics, many chapters. Conics means circle. Okay, you know very well about the circle. This is a one circle. Okay, but conics means not circle. Conic means there are four parts in a conics: circle, parabola, ellipse and hyperbola. Okay, so these are the also important chapters: trigonometry, differentiation, integration, set theory, straight lines, conics. ठीक है, चलो तो डीप में तुम जो भी कैलकुलेशन है वो हम बाद में करेंगे अबाउट ऑल चैप्टर्स. ठीक है,
डीप में जो डिस्कशन ऑफ द 11 discussion of the 11 chapters, discussion of the 12 chapters. ठीक है, तो here now we go to start our chapter number 3 trigonometry functions. चैप्टर नंबर 3 trigonometry functions. ओके, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि यू नो दिस ऑल पार्ट इज नॉट न्यू फॉर यू एंड सेम दिस टेबल इज नॉट न्यू फॉर यू. ठीक है, मैं आपको यहाँ पर जो भी हिंट दूंगा, hint for the table, after the table some hints. ठीक है, परफेक्टली नोट करके रखो आपके पास एंड देन रिवाइज. ठीक है, पॉइंट बराबर मार्क करके अपने पास रखो. ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3 ऑफ आवर 11 साइंस एंड चैप्टर नंबर 3 trigonometry functions. ओके, तो वी नो दैट कि देयर आर 6 trigonometry functions in our trigonometry. There are 6 trigonometry functions in our trigonometry. Sine, cos, tan, cot, sec, cosec. Short name. These are the short name. Sine, cos, tan, cot, sec, and cosec. 6 trigonometry functions. Now, जैसे मैंने आपको ऑर्डर बताया यहाँ पर, same follow this order: sine, cos, tan, cot, sec, cosec. Sine, cos, tan, cot, sec, cosec. Ready? This is your order: sine, cos, tan, cot, sec, cosec. Now you know very well about these three. Inverse of sine is a cosec, inverse of cos is a sec, and inverse of tan is a cot. So sine is a 1 by cosec, or cosec is a 1 by sine, cos is a 1 by sec, or sec is a 1 by cos, tan is a 1 by cot, so and cot is a 1 by tan. Okay, now tan is the ratio of sine and cos, and cot is the ratio of cos and sine. Okay, so this is the formula for the tan and this is the formula for the cot. Okay, and now 3 identities we have. The first identity is sin square theta plus cos square theta equal to 1. Second identity, sec square theta minus tan square theta is equal to 1. And third identity is cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Okay, कई सारे स्टूडेंट है 11th में या 12th में, जब कभी भी हम बोले कि चलो भाई व्हाट इज द सेक स्क्वायर थीटा, तो पहले वो लास्ट पेज पे क्या करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा वाली फॉर्मूला लिखते हैं कि चलो सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला इज सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड देन बाद में फॉर्मूला अरेंज करते हैं कि सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1. आपको ऐसा नहीं करना है. ठीक है, अगर आपको स्पीड चाहिए फॉर एनी सम टू कैलकुलेट एनी सम, फॉर्मूला याद रखो एंड दिस आर द बेसिक फॉर्मूला एंड इजी डायरेक्ट. 3 आइडेंटिटी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, then sec square minus tan square equal to 1 and cosec square minus cot square equal to 1. तो sin square theta is 1 minus cos square और cos square theta is 1 minus sin square. sec square theta 1 plus tan square, and but tan square, so to find the tan square by using this formula, so take the tan square other side and 1 other side. So tan square theta becomes other side positive and 1 take this side. So tan square theta is equal to sec square theta minus 1. Cosec square theta equal to 1 plus cot square, or cot square theta equal to cosec square theta minus 1. Ready? One more time. Sin square is 1 minus cos square 1 minus sin square. Ready? Sec square theta 1 plus tan square. But tan square, so tan square equal to sec square theta minus 1. Cosec square theta 1 plus cot square. But cot square cosec square minus 1. Okay? So these three are the identities. And now table. So we know that this table is for the 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. And I am giving this table only for the 3 functions, sine, cos and tan. Because we know that after completing sine, cos, tan, then other 3 functions we can find easily. Because the inverse of sine is a cosec, inverse of cos is a sec, and inverse of tan is a cot. So most important functions are main 3 functions. Main 3 functions are sine, cos, tan.
Sine, cos, tan are main three functions and other three are the inverse of main functions. Okay. चलो तो टेबल फॉर द मेन फंक्शन साइन कोस एंड टेन डन. तो यहाँ पर भी ऐसा है कि कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि बिफोर द एग्जामिनेशन अगर आपके पास वो सप्लीमेंट्री आ जाती है तो वो रफ में क्या करते हैं कि लास्ट पेज पर वो जो पूरा का पूरा टेबल है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं. देन जब कभी भी उसका यूज़ हो कोई सम में तो वहाँ पर देख के वो वैल्यू लिखते हैं कि चलो दिस इज़ द साइन 30, दिस इज़ द कोस 30. आपको ऐसा नहीं करना है. लाइक कभी भी आपका यूज़ है tan 30 डायरेक्ट याद होना चाहिए कि चलो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ tan 30 1/√3. रेडी. इट मीन्स रिमेंबर दिस ऑल वैल्यूज डायरेक्टली विदाउट यूजिंग टेबल. टेबल ड्रॉ नहीं करना है आपको, याद रखो वैल्यू. ठीक है. हाँ तो साइन 0 is a 0, sin 30 is a 1/2, sin 45 is a 1/√2, sin 60 is a √3/2 and sin 90 is a 1. देन cos के लिए क्या करोगे आप? तो जनरल स्टूडेंट ऐसे करता है कि cos मीन्स ऑपोजिट टेबल ऑफ द साइन. आपको ऐसा नहीं करना है. मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद रखनी है. ठीक है. वैल्यू याद रखनी है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन एंगल. ओके. तो नाउ cos 0, तो cos 0 1 टेबल आपके सामने दिख रहा है. cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 and cos 90 0. रेडी. देन tan 0 tan कई सारे स्टूडेंट tan में भी ऐसा ही करते हैं कि tan इज द रेशियो ऑफ साइन एंड cos. ठीक है. तो साइन cos रेडी तो tan इजीली हो जाएगा. बट ऐसा नहीं, डायरेक्ट याद रखो tan 0 इज ए 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 and tan 90 is not defined. Okay, so this is your table. चलो तो 6 trigonometry functions, then inverse formula, then ratio, tan is the ratio of and cot is the ratio of, and then 3 identities and table. ठीक है. ये जितने भी टॉपिक है आपके लिए न्यू नहीं है. ठीक है. टोटली यार रिपीट कंसेप्ट्स 10th में आपने देख लिया है. ठीक है. हाँ. नाउ फर्स्ट टॉपिक और 11 साइंस इज ए यूनिट सर्कल. एक क्वेश्चन होगा माइंड में आपका कि भाई वाई दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर. तो सर्कल का क्या यूज है यहाँ पर? आप चेक करो. आप कभी भी आर्क बनाओ, कोई भी आर्क बनाओगे आप. ठीक है. लाइक हम कोई भी एक आर्क बनाए कि मेकिंग द आर्क ऑफ ए 90 डिग्री. तो दिस इज ए 90 डिग्री राइट. तो ये एक एंगल ही हुआ ना कि दिस इज ए 90 डिग्री. इट मीन्स यहाँ पर सभी एंगल्स हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 90, देन मोर 91 92 93 94 अप टू 180, देन मोर देन 180 ईयर, देन मोर देन ईयर. तो यहाँ पर सभी एंगल्स हैं. सो वी नीड द सर्कल फॉर द ट्रिग्नोमेट्री. ओके. चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ 11 साइंस. एंड name of this first topic is a unit circle. Okay, so let's start our unit circle. Here no requirement of definition. ठीक है. कभी भी कुछ कोई ऑब्जेक्टिव है या MCQ है तो कहीं पर भी कोई डेफिनेशन का यूज़ नहीं है. ठीक है. बट अगर हम स्टार्ट ही कर रहे हैं कि चलो यूनिट सर्कल, ठीक है, तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है. ठीक है. अगर हो सके तो याद रखो, इफ इन ए सर्कल center is 0 0, center of the circle is 0 0, this point is a center and which is 0 0 and radius is 1 unit, then it is called unit circle. What is the main important things for a circle? So there are two important things. One is a center, another is a radius. By using center and radius we can draw any circle. So center is 0 0 and radius is 1, it is called unit circle. Okay, so this is center which is 0 0. Now what is the definition of radius? So center to the point on the circle is called radius. Center to the point on the circle is called radius. So this part is a radius, this part is a radius, this part is a radius, this part is a radius. So radius means center to the point. Center to the point on the circle is called radius. Okay, so what is the value of this radius, which is 1? So radius is 1, so this distance is 1.
So taking the distance 1 and making a one fully arc, then this circle is called unit circle. Okay. Center is 0, 0, radius is 1, it is called unit circle. Ready? चलो तो डेफिनेशन हो गई. अभी हम ये सर्कल का यूज करेंगे. विदाउट दिस सर्कल ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट पॉसिबल. वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग. विदाउट दिस सर्कल ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट पॉसिबल. ओके, जाओ. What is the name of this circle? Unit circle. Means center is 0, 0 and radius is 1. Center is 0, 0, radius is 1. So this is a unit circle. Now चलो, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर टोटली एंगल्स हैं. ठीक है. एक क्वेश्चन होगा आपको कि यहाँ पर डेफिनेशन तो ओनली यूनिट सर्कल है, तो फिर मैंने यहाँ पर x एंड y क्यों ड्रॉ किया है कि x एंड y. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस x एक्सिस एंड y एक्सिस. बराबर, क्योंकि दिस नेम ऑफ दिस टॉपिक इज अ यूनिट सर्कल. तो इफ वी ड्रॉ ओनली x एंड y, देन हियर 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स. आप क्या बोलते थे 10th में कि दिस पार्ट इज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, this part is a second quadrant, this part is a third quadrant, and this part is a fourth quadrant. So here these 4 quadrants are made by the x and y. These 4 quadrants are made by the x and y. 1, 2, 3, 4. So these 4 quadrants are called coordinate quadrants. These 4 quadrants are called coordinate quadrants. Now first quadrant x and y both positive. Second quadrant x is negative and y is positive. Third quadrant both negative. And fourth quadrant x is positive and y is negative. होगा. तो सेम हमने यहाँ पर क्या किया, इस in a circle putting x and y. So circle is converted into 4 parts. After putting x and y on the circle, then circle is converted into 4 parts. 1, 2, 3 and 4. So these 4 parts are called trigonometry quadrants. Only x and y, 1, 2, 3 and 4. 4 parts are the coordinate quadrants. But circle and x and y, then these 4 parts are called trigonometry quadrants. So these 4 parts are called here trigonometry quadrants. Okay, चलो, तो this is your x and y, and unit circle x and y. Ready? Now how to use our this unit circle in our trigonometry. तो फर्स्ट वन, एक सिंबल याद रखो, ऑल एस टी एंड सी. ऑल एस टी एंड सी. एक क्वेश्चन होगा माइंड में कि भाई
हमने यहाँ पर ऑल एस टी सी तो लिखा है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल एस टी सी एंड वाई हियर ऑल, हियर एस, हियर टी, हियर सी, वाई नॉट चेंज? ओके, तो एक मीनिंग समझो। हियर ऑल एस टी सी, देन अगर आप हम यहाँ पर कोई ऐसा एक आर्क बनाए, चलो कि भाई दिस इज अवर आर्क, बराबर, तो ये एंगल क्या होगा? एंगल आपका 90 डिग्री, दिस एंगल इज ए 90 डिग्री, बट यहां पर एंगल क्या होगा? 0। तो ये एंगल क्या होगा आपका? इतना एंगल, ओनली दिस फॉर, फिर से आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो परफेक्टली चेक हियर कि दिस पार्ट एंड दिस एंगल इज ए 90 डिग्री, सेम सेकेंड पार्ट एंगल इज ए 90 डिग्री, सेम थर्ड पार्ट एंगल इज ए 90 डिग्री, सेम फोर्थ पार्ट एंगल इज ए 90 डिग्री। होगा, तो मीनिंग इज कि 90 डिग्री इज ए राइट, बट ऑन द सर्कल देर आर एंगल्स हियर। तो 0, then 1 2 3 4 5 6 7, then here 90 degree, then 91 92 93, here 180 degree, then 181 182 180 up to 270 degree here, and then 271 272, then here up to 360. Now this is a complete unit circle. Done. Starting with the 0, ठीक है, here point and making a one arc up to this. So starting with the 0, and this angle is a 90 degree, so here 90. Now making a one more arc, so this angle also 90 degree, so up to 90, then also 90, 90 plus 90 180, and then making a one more arc, so this angle also 90, so 180 plus 90 270, and then making your last arc, this angle also 90, 270 plus 90 360. So starting with the 0, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360. Okay, so or 1 2 3 and 4, so same these 4 parts. Okay, so these 4 parts are called trigonometric quadrants. These all 4 parts are called trigonometric quadrants. Now हमने यहाँ पर all एस टी सी लिखा है, तो this part is a all. जीरो टू 90, 0 to 90, तो 0 to 90 इज राइट। तो यहाँ पर एंगल क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 90 और नॉट। ओके, नाउ हमने यहाँ पर सिंबल क्या लिखा है? ऑल। नाउ ऑल मीन्स चेक 0 to 90, टेकिंग द एंगल 0 to 90, ऑल मीन्स ऑल 6 trigonometry functions, sine, cos, tan, cot, sec and cosec. For the 0 to 90, for the 0 to 90, all trigonometry functions values are positive or not. यहाँ पर जो भी सिंबल लिखे वो पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पर, ऑल पॉजिटिव, एस पॉजिटिव, बाद में देखेंगे व्हाट इज एस, टी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव। यहाँ पर जो भी लिखा है वो पॉजिटिव है, नहीं लिखा है वो नेगेटिव है। First quadrant symbol is all for the 0 to 90, otherwise speak all for the first quadrant. Ready? So here all, S, T and C. First part all is for the 0 to 90. So meaning is for the 0 to 90, answer of all trigonometry are positive. Ready? हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, मैंने आपको बोला कि भाई चलो 10th में आपके पास अप टू टेबल इतने टॉपिक थे, टेबल तक आपको पता है, ठीक है। तो मीन्स आपको टेबल तक पता है, तो मीनिंग यू नो अप टू ओनली 90, मोर देन 90 आपको कोई भी एंगल नहीं पता है कि व्हाट अबाउट मोर देन 90 एंगल्स, आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। तो जब भी आप मोर देन 90 अब वैल्यूज फाइंड करोगे तो आइदर आंसर इज पॉजिटिव और नेगेटिव।
हाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा कि भाई चलो अगर आप बोलोगे साइन एंड 120 व्हाट इज द आंसर, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग 2 or 3 टॉपिक्स देन वी कैन फाइंड द मोर देन 90 वैल्यूज। आफ्टर कंप्लीटिंग 2 or 3 टॉपिक्स देन वी कैन फाइंड द मोर देन 90 वैल्यूज। ओके, तो 2 or 3 टॉपिक्स, तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक टू फाइंड more than 90 values. This is the first topic to find the values for more than 90. चलो अब बोलोगे कैसे कि दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। 1 2 3 and 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट फिक्स, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, first quadrant, and in the first quadrant what is the symbol all? All means all the trigonometry functions are positive. All the trigonometry functions are positive. Sine for the 0 to 90, sine, cos, tan, cot, sec and cosec. Answer of all the functions are positive. Now second quadrant. चलो फर्स्ट तो हमने देख लिया कि all means all the 6 functions. Okay, our trigonometry functions are sine, cos, tan, cot, sec and cosec. Sine, cos, tan, cot, sec and cosec. Okay, now second quadrant, what is the symbol? S. Second quadrant symbol is S. Now S means sine, S means sec, ठीक है, दिस इज योर स्टार्टिंग। तो याद रखो ये जो सिंबल है ऑल एस टी सी ओनली फॉर द मेन फंक्शंस, दिस ऑल सिंबल्स आर ओनली फॉर द मेन फंक्शंस। इन द मेन फंक्शंस एस मीन्स, इन द मेन फंक्शंस एस मीन्स साइन, एस मीन्स साइन। तो सेकेंड क्वाड्रेंट एस एंड एस मीन्स साइन। आप जानते हो कि अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो साइन सिंबल एक ही याद रखो साइन, बट इनवर्स ऑफ साइन इज कोसेक। साइन पॉजिटिव तो कोसेक ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया। लाइक इफ वी राइट हियर 5 तो ऑपोजिट ऑफ 5 इज ए 1/5। तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि चलो 5 तो ऑपोजिट ऑफ 5 इज ए 1/-5। अगर यहाँ आपने यहाँ पर 5 लिखा है ना, 1 करो तो 1/5 होगा, ठीक है। तो 5 पॉजिटिव तो डेफिनेटली 1/5 ऑल्सो पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव, तो साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। while other trigonometry functions are negative. Ready? चलो then two quadrants over, all S. Now in the third quadrant, what is the symbol? So in the third quadrant, third quadrant symbol is T. Okay, चलो तो third quadrant symbol is T. So T means always check the symbols in your main functions. Main functions T means 10. So T means
tan, and we know that if tan is positive, so opposite of tan is cot. So tan and cot are positive, while other functions are negative. Ready? Next, fourth quadrant. Fourth quadrant symbol is C. Okay. So fourth quadrant symbol is C, and C means, तो C means cos, cosec, cot. कौन सा? तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि चलो दिस ऑल सिंबल्स ओनली फॉर द मेन फंक्शंस. ओके, तो मेन फंक्शंस C means cos. तो C means cos, and we know that the cos positive, तो opposite of cos is sec. Sec also positive. Okay, तो cos and sec are positive, while other functions are negative. Ready? चलो, तो this is the use of OLSTC. Well, 4 quadrants: first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Okay. हाँ, जब भी यूज करो, कभी भी आपको सर्कल ड्रॉ नहीं करना है, OLSTC ड्रॉ नहीं करना है, याद रख लो, एंड ईजी है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. First quadrant symbol is all. All means all the functions are positive. Second quadrant symbol is S, and always use these all symbols for the main functions. So main functions S means sine. So second quadrant sine and cosec are positive, while other 4 are negative. Third quadrant symbol is T. So tan and cot are positive, while others are negative. And fourth quadrant symbol is C. So C means cos and sec are positive, while other functions are negative. Okay. तो what about tan in the second quadrant? तो आपको कैसे देखना है कि tan in the second quadrant? तो second quadrant, what is the symbol? S, and S means only sine and cosec are positive, others are negative, so tan is negative. Third quadrant sine negative, fourth quadrant tan negative, but third quadrant tan positive, second quadrant sine positive, फर्स्ट क्वाड्रेंट एनी फंक्शन पॉजिटिव. ओके, चलो, तो टू फाइंड द, हम ये जितनी भी थियरीज लिख रहे हैं, लाइक आपको पता है कि साइन 30 इज ए 1/2. हाँ, टेबल में है हमारे पास कि साइन 30, 45, 60, 90. ओके, देन कॉस 30, tan 30 है, ठीक है. बट व्हाट अबाउट द साइन 120? तो 120 इज मोर देन 90 एंगल और नॉट? तो हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या बोलेंगे कि मोर देन 90 एंगल्स, ऑल एंगल्स, मोर देन 90 एंगल्स, ऑल एंगल्स आर हायर एंगल्स, मोर देन 90 एंगल्स आर हायर एंगल्स. तो टू फाइंड द हायर एंगल्स वी नीड 3 or 4 टॉपिक्स. ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 3 or 4 टॉपिक्स, दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, यूनिट सर्कल. ठीक है, पूरा सर्कल आपको याद रखना है. 0, 90, 180, 270, 360. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Symbols all S, T, C quadrant wise. Ready? चलो, तो over this first lecture over of our trigonometry chapter. Okay, so we will meet in our next lecture with new concept. Okay, तब तक के लिए आपको जितनी भी थियरी है याद रखो, रिवाइज करो. ठीक है, चलो, तो वी विल मीट अवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू.